على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. हुजूर ताजदार मदीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सो parole mubarak. C'est lui qui peut envoyer 100 fois Duroud et Pâques, l'eau, moi, Allah Azza wa Jal, pour écrire l'eau front. Qui s'azimoun-là les libérer depuis du fait Jahannam et depuis hypocrisie aussi. Et jour Qayamat pour lever parmi ban shuhada. Subhanallah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam, salatan wa salaman alayka ya sayyidi ya makki ya madani ya Rasulallah. Mon bon chers frères et sœurs en islam, alhamdulillah, bienvenue dans nos premières classes, première session des Faizane Taharat course. Inch'Allah Azza wa Jal, ou pour connaître depuis tout à l'heure, Inch'Allah, qui ban quelque chose qui nous peut en prendre dans sa course, qui nous peut faire. Combien de temps nous pouvons faire cette course-là? Qui sont célèbres pour être? Et Inch'Allah Azza wa Jal, qui ban quelque chose qui nous peut en prendre dans sa course-là. Alors, premièrement, nous pouvons faire tout requête, c'est qui finit join. S'il vous plaît, share sa vidéo-là dans ban groups avec ban contacts, qui ban les autres gens aussi capables profitent sa ban l'éducation, sa ban connaissance, surtout concernant fiqh, qui c'est qui nous peut en prendre concernant taharat. Faizane Taharat course. Alhamdulillah, Dawat Islami so Majlis courses. C'est qui habitué design ban courses Dawat Islami. Alhamdulillah, Dawat Islami il y a plusieurs departments. Un département spécifiquement pour ban courses. Sa majlis là, sa ban ulama, sa ban muftiyan ikram. Je travaille c'est ça même qu'ils ont design ban courses pour ummah. Les capables de profiter d'un mot facile, d'une façon facile, que tout le monde est capable d'en prendre quelque chose concernant din et surtout quelque chose base, qui est un musulman, les supposément besoin comme ça. Alhamdulillah, parmi ces ban courses qui Dawat Islami sont Majlis Courses Design, un course qui appelle Faizane Taharat Course. Et ça même, Inch'Allah Azza wa Jal, nous peut le faire, nous peut commencer à partir d'aujourd'hui. Dans Faizane Taharat course concernant fiqh hanafi, ça. Premièrement, je finis expliquer que tout ban masail, c'est qui nous peut mettre devant nous, tout ban quelque chose, c'est qui nous peut en prendre, c'est d'après fiqh hanafi. Imam Azam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayhi, son fiqh, d'après son maslak, Inch'Allah Azza wa Jal, nous pouvons en prendre. Deuxième quelque chose qui moi pour faire tout, c'est qui peut écouter moi, c'est qui pour écouter moi, qui fait une manière qui tous les semaines, parce que sa course, Inch'Allah, il peut aller tous les semaines une fois. Tous les samedis, 8h30 jusqu'à 9h15, comment nous avons décidé que Inch'Allah, nous pouvons faire sa course là. Et comment 9h15
o fini arrivé fini là inshallah nous pour switch nous pour alget madani muzakara samji aswa and selcam madani muzakara तो inshallah azza wajal kuma course la pour fini 9h15 inshallah sharp nous pour say fini li et là nous pour switch nous pour allo madani muzakara tous les samji li pour comme ça même कि kuma course fini nous pour alget madani muzakara so design से कि मजलिस फिन फेया इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नुपु आप्रान वुजू का बयान गुस्ल का बयान पानियों का बयान बंदलो avec qui bandelo qui enjimun li gain droit faire wuzu et avec qui delo li pas gain droit faire wuzu tayammum का बयान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नुपु आप्रान tayammum aussi नजासतों का बयान très important ça नजासतों का बयान बान quelque chose qui impuré उसके बारे में सीखना नु बिजा कोने की quelque chose li नापाक की quelque chose li नजस की quelque chose li नजासत गलीज़ा की नजासत खफीफा सब अन quelque chose ला नु पहुंचान et देंगे ले इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कपड़े पाक करने का तरीका कि si en linge ou bien en jimun soleko ou bien en carpet ou bien en multon ou bien n'importe qui en quelque chose living napak li gagné en quelque chose un pialoli तो अब उसको पाक कैसे किया जाएगा कुमानुपु कपाव फेयर पाक सा quelque chose là ça aussi très important इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल dans nos courses nous vous sei en prendre ça ban quelque chose là सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूल अल्लाह Enzafé encore mon pour dire avant de commencer que si ban islami bhai ban islami behen pe get moi live moi pour faire requête s'il vous plaît prends un plume avec un diary un cahier ensemble avec vous et notez ça ban quelque chose là c'est que moi pour al dire parce que définitivement il pas un speech qui n'est ou écouter speech oui machallah joli causerie nous bien apprendre non ça ban quelque chose qui moi peut al dire concernant fiqh concernant taharat c'est nous besoin noter parce qu'Inch'Allah, quand vous pouvez avoir l'habitude de noter là, au contraire, quand vous pouvez get madani muzakara aussi, vous pouvez écouter causerie aussi, il est bon si on a l'habitude que nous noter. Parce qu'il définitivement, dans nous l'esprit, tout quelque chose lui restait, c'est pas possible. Alors quand vous pouvez note down, ban quelque chose, vous pouvez écrire, après 2 bananes, 3 bananes, au contraire, ou ban enfants aussi, Inch'Allah, si y a un zou pour ouvrir ou diary, il peut dire, oui, Mashallah, papa t'y habitué noter, papa t'y habitué en prendre din, maman t'y habitué en prendre din, tout ça, Inch'Allah, un capable, vin, un sadaqae jariya aussi pour vous. Et d'après Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu se parole qayyidul ilma bil kitabah कि इल्म को लिख कर कैद कर लिया करो इल्म को लिख कर कैद कर लिया करो सीनोली बुफिनी आलेली तो लिहाजा लिखने की आदत बनाए इससे तू सा कोर्स से किनु पे फेया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उpu profiter plus beaucoup quand upu ena sa l'habitude noter ena sa l'habitude écrire इंशाअल्लाह mon bon cher frère et sœurs en islam faisane taharat course so schedule li pour comme ça qui commencement 20 minutes इंशाअल्लाह मुpu donne une leçon मुpu explique un quelque chose ban topic mun fek dia lo sa ban topic la inshallah azza wa jal 20 minutes ou bien 25 minutes mupu cause lo la la dernier 15 minutes ou bien 20 minutes c'est qui dernier pour ena là mupu donne autres l'occasion pour pose question mupu faire une requête avec tous ceux qui peut écoute moi que quand ou ena pour pose question si ena qui question peut lever da ou la tête तो s'il vous plaît pas type li aste ala pas type quand on peut donner leçon parce que moi pas pour get ou comment aussi de toute façon moi peut trouver ban comments peut venir machallah inshallah salam amin subhanallah ça ou pas un problème on veut faire ou capable faire mais plus beaucoup l'attention ou mettre l'eau ce qui me peut expliquer commencement sur 20 minutes 25 minutes là quand on peut dire voilà pose question aste तो अब बन क्वेश्चन से की हुए ना दाउलाते उ कपाव चिपे ला इंशाल्लाह मु फॉर्म पोर्टाब दमुला में लेला एन पावन बन क्वेश्चन से की मुन कपाव trouver बन क्वेश्चन से की मुन récit trouver et मु poussei répondre इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल et si en cas fin arriver qui ou ban question मु pan récit trouver ou bien
les final là vite nous pas réussi trouver to naraz mat hoyega que ou pas répondre mon question c'est qui me pour trouver me pour essayer répondre ça question là inshallah azawajal seulement li pour aller jusqu'à 9h15 et 9h15 inshallah sharp nous pour finir faire dua nous pour terminer normalement cheikh tariqat amir ahl sunnat fondateur de dawat islami hazrat allama maulana muhammad ilyas attar qadri damat barakatuhumul aliyah. Tous les temps, quand il écrit un livre, il donne nous un joli dua. So, Inch'Allah, tous les semaines, nous pouvons commencer nos cours par cette dua-là. So, fazilat qui s'élève, qui peut lire cette dua-là avant d'en prendre quelque chose, et spécifiquement concernant din, Inch'Allah, Azza wa Jal, par barakat cette dua-là. Et spécialement, mon Dieu, concernant din, concernant dunia aussi, si un monde peut apprendre, il est capable de lire cette dua-là. Mais Inch'Allah, ce fazilat qui sait qu'il peut apprendre, il peut rester dans la tête. Inch'Allah. तो आइए मैं आपको ये दुआ पढ़ाता हूँ इंशाअल्लाह tous les semaines nous pourrions cette दुआ là avant là nous commençons nous leçons बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका दुआ जो हमें रोजाना हम सबक की पढ़नी है वो है अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun wa salamun alayka ya Rasulallah. Mon bon chers frères et sœurs en islam, pour en prendre concernant taharat, c'est un farz ain le chaque musulman. Farz ain. Farz ain veut dire obligatoire. Pena sape pena barré comme dit causé. Pas capable de dire qu'il me panne le temps. Non. Concernant taharat, les farz ain pour en prendre le chaque musulman. Baligh. Un musulman qui est musulman et il est baligh, voilà. Là, il est farz ain loli qu'il est besoin en prendre concernant taharat. Qui fait? Parce que taharat, c'est première condition de ibadat, première condition de namaz. Et nous devons déjà apprendre que quand un djimoun n'est pas respecté condition, son namaz pas pour compter. Moi, je donne l'exemple aussi. Moi, je donne ça l'exemple là qui nous capable qu'on valait à sa course là, nous capable qu'on valait pour concernant din et surtout concernant taharat, qui quantité li important pour apprendre. Un djimoun li rentre dans Kaabatullah Sharif. Pas dans Haram Sharif, moi, peut causer. Dans Kaaba, dans bâtiment Kaabatullah Sharif, la porte ouverte pour lui, il rentre en dedans. Toute longue, la nuit, il débouté, il fait namaz. Lendemain, grand matin, quand il sortit, alhamdulillah, mon fait beaucoup namaz, beaucoup sajda, beaucoup nafil mon fait. पूछने वाला पूछे वुजू तुम्हारा था एसकी तो चीफे वुजू बोला नो सा मुपाची ना वुजू मुपान गई चीफे पाची ना लेता हूं मुपान गया लेता हूं फिर वुजू नेक मुन फिया नमाज इबादत दा काबा मु पोजू une question est-ce qu'il sa jimun la sur ibadat accepté तो आप जवाब देंगे कि नहीं définitivement un jimun saint d'esprit il peut répondre que non quand pena wuzu quand même il peut faire ibadat dans Kaaba aussi c'est pas capable qu'il soit ibadat accepté alors taharat c'est première condition de namaz et quand nous peut cause taharat rappelle bien c'est lui qui peut noter machallah note ça quelque chose là important que quand nous peut cause taharat c'est trois quelque chose qui est bien propre pour un namazi trois quelque chose. L'important qui nous compte ces trois quelque chose là, la N par N, Inch'Allah, nous pouvons prendre concernant ces trois quelque chose là.
Quand en Zimun li peut faire namaz, première condition c'est taharat. Taharat veut dire propreté. Qui ban quelque chose, qui quelque chose besoin propre, trois quelque chose. Numéro N. Namazi so badan. Le corps de sa namazi là. Le corps de sa Zimun là, c'est lui qui peut débuter, peut faire namaz. So le corps besoin propre. C'est-à-dire les besoin en a roussel. Les besoin en a wuzu. Pas besoin en a aucun malpropreté qui colle sur le corps. Pas besoin en a aucun najas quelque chose sur le corps. Alors, premier quelque chose, c'est qui besoin propre pour sa namazi là, c'est sur badan, sur le corps. Deuxième quelque chose qui besoin propre pour sa namazi là, c'est sur linge. Sur linge, c'est qu'il fin mettre. Quand tu te linge, il fin mettre. Alors, tout linge besoin propre. Il n'est pas capable qu'un namazi lui pense, lui dit que oui, linge c'est qu'il a au monde mette jubba, tout ça là, sali propre, mais seulement à cause tu peux faire fraisser, tu peux faire frais, on prend un mouleton, on prend un shawl, on prend un jacket, mais ça pas si propre, mais on dans la propre. Mais non, n'importe combien linge, il peut aller même, il peut mettre le sur le corps, alors tout linge bien propre. C'est qui namazi peut mettre. Et comme on peut dire namazi, définitivement, il y a monsieur aussi là-dedans, et il y a madame aussi là-dedans. Tous les deux inclus là-dedans. Tous les deux, le corps et le linge, bien propre, bien Pâques. Troisième quelque chose, sa place, quand sa namazi là peut débouter, sa place, quand il peut débouter, sa place là bien Pâques, bien propre. Alors là, s'il peut faire namaz, la terre bien propre. S'il peut faire namaz, la terre mon peut dire le sali. Et s'il peut faire namaz, le en moquette, ou bien en musalla, ou bien le en drap, de n'importe qui quelque chose. Alors, il y a ça quelque chose là aussi bien besoin qu'il est propre, qu'il est musalla, qu'il est moquette, qu'il est sali, n'importe qui quelque chose que il peut débouter, il peut faire namaz. Et surtout, quand nous faisons des détails, quand nous rentrons dans les détails, surtout, quand ce parti, l'écho, a'zae, sujoud, quand les gens pour faire sajda, ça 7 les autres qui touchent, alors ça va quelque chose là, ça va place là, obligatoire qu'il est bien propre, il est bien Pâques. Donc ça, trois quelque chose qui nous en prennent, quand un musalli, un namazi, quand il peut aller faire namaz, ça trois quelque chose bien Pâques, bien propre. Sur l'écho, sur l'aise, sur place. Alors, Inch'Allah, c'est un par un. Sur l'écho, quand nous peut dire, définitivement, il y a wuzu, il y a roussel, avec quelque chose, n'a pas besoin de sur l'écho. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, c'est qui nous peut commencer. Nous pouvons commencer par najasat même. Najasat, normalement, हम बोल सकते हैं, quelque chose impure, n'a pas najasat. Alors, notez à ce कि नजासत एना दे qualité. Combien qualité? Najasat ena दे qualité. Un appelle najasate ghaliza et deuxième appelle najasate khafifa. Si nous faisons les plus faciles pour vous, nous sommes capables de dire comme ça, najasate ghaliza, c'est grave. Grand najasat. Gros najasat. Et najasat khafifa, najasat, mais mal propre, najasat khafifa, nous capables de faire les plus faciles qui, pas gros là, mais petit najasat, petit mal propre. ऐसा उसका हुक्म कुछ और है. नजासत गलीजा ली एना सोबन हुक्म ली एना सोलालवा ए नजासत खफीफा ली एना सोलालवा. Alors Inch'Allah Azza wa Jal, aujourd'hui nous pouvons apprendre concernant najasat galiza. Donne-nous le temps, Inch'Allah Azza wa Jal. Là, comment nous le temps pour finir. Là, Inch'Allah Azza wa Jal, nous pouvons le question, réponse, 9h15, Inch'Allah, nous pouvons faire dua. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Najasat et des qualités, najasat ghaliza, najasat khafifa. Là, nous pouvons en prendre concernant najasat ghaliza. Alors, vous êtes capable de mettre un title, impureté, hein, impureté, non? Najasat, impureté, जी, impureté. तो आप ये लिख सकते हैं, वो capable नोटे कि impureté ghaliza, या आप इसको अगर और फासिल करना चाहें तो grand impureté. ये आप अपने पास नोट कर लें. Astea ne mete ki ban quelque chose qui
impuré, qui ban quelque chose qui n'a pas, najasat, najas, voilà. Numéro 1. Ban quelque chose qui fait une sortie depuis dans Jimun so leko, qui li casse vuzu, ou bien li casse roussel. Bien facile ça. Si vous pouvez comprendre, je n'ai pas besoin de détailler même, mais toujours je peux détailler moi. Je peux dire où qui vous cave noter. Mais comprends-le ça la loi là. Ça collia là, comment nous dire, ça comprend-le que ban quelque chose qui sortit depuis dans Jimun so leko qui casse vuzu ou bien casse roussel. Ça ban quelque chose là, najasat ghaliza. Par exemple, la selle, urine, un jimun sur la selle, jimun sur urine, najasat ghaliza, grand najasat. Du sang, c'est qui coulait, behtahoun, parce que quand du sang coulait, vous vous cassez. Alors quand du sang coulait, ça du sang là, li napak, li najasat ghaliza. Comme ça même, la matière, pipe, comment on dit, passe, la matière. Quand la matière sortit, alors li casse vuzu. Quand li casse vuzu, alors li vin najasat ghaliza. Vomi, plein bouche, comment nous dire, c'est qui n'est pas capable de chini, n'est pas capable d'arrêter, n'est pas capable de chini, il sorti. Alors ça vomi là, li casse mo vuzu. Quand li casse mo vuzu, alors li vin najasat ghaliza. Grand najasat. Grand impiété. इसी तरीके से हैज और निफास pour une madame concernant une madame li gain so हैज ou bien li gain so nifas so jisan ou bien istihaza. हैज, nafas, istihaza, trois quelque chose là. हैज normalement une madame qui li gain so période tous les mois, ça c'est हैज. Nifas quand une madame li gain petit bébé, alors jisan là continue jusqu'à un peu jour, normalement appelle li nifas. Istihaza qui veut dire qu'il y a une madame qui gagne sa période, mais seulement son time limit, les plus qui sont normalement time limit. Les habitués gagnent 5 jours ou bien 7 jours, alors l'illinal gagne 11 jours, plus qui 10 jours. Alors rappelle bien sur la loi, comme ça, surtout pour une madame, ce qui peut écouter moi, que si une madame li gagne sur haise, li pan arrêté après 7 jours, li habitué gagne 7 jours, mais li pan arrêté 7 jours, 8e jour, 9e jour, 10e jour, li still compte de haise. Mais comment l'infini dépasse 10e jour? Ça, madame là, si li still continue à bleed, alors ça, 10 ans là, nous pour appeler istihaza. Istihaza qui veut dire qu'il sur la loi, qu'il est besoin al baigner, il besoin continuer à faire son namaz. Si Ramadan, il besoin garde son rosa, il est capable de faire tout bon travail, c'est qu'il est habitué à faire d'état propre, parce que c'est un istihaza. À cause d'une maladie qu'il peut gagner sa 10 ans là, c'est pas haise. Seulement, ce 10 ans là, still n'a pas. Ça 10 ans là, il n'a pas. Mais madame là, pas n'a pas casté. Après 10 jours, les besoins baigner, besoin faire roussel, madame là, nous pouvons considérer pas même parce que c'est un istihaza, c'est pas haise. Moi, j'espère qu'ils ont fini de comprendre ça. Alors, c'est ça, quelque chose là. Haise, nafas, istihaza, se disant. Pour monsieur, sperme, définitivement, c'est najasat ghaliza. Madi, avec wadi. Ça, tous les trois quelque chose pour un monsieur. Mani, wadi, avec madi. Mani, c'est sperme. Wadi, normalement, est quelque chose qui sortit, les un peu épais même, mais seulement les blancs comme de l'eau. Les pas blancs, les transpirés surtout, plutôt transpirés comme de l'eau. Mais seulement les antigit épais. Alors ça appelle les wadi. Ça aussi les casse vuzu ça. Si ça les sortit, les casse vuzu et najasat ghaliza même ça. Et mazi, normalement les pas épais. Les pas épais, les un peu de l'eau, seulement sur couleur un peu comme du lait. Les un peu white, un peu blanc. Alors ça aussi, une fois qu'on les sortit, c'est casse vuzu pour un monsieur et les najasat ghaliza. Moi, j'espère qu'ils ont fini notre saban quelque chose là. Saban quelque chose, c'est qui sorti depuis dans Jimun so leko, qui casse vuzu, ou bien casse roussel. Saban quelque chose là,
से नजासत गलीज़ा द फतावा आलमगीरी मुपे मौशन तो साला अल्हम्दुलिल्लाह नु कोर्स सो सिलेबस को मामू चीजिया पुएना इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दे पी फतावा आलमगीरी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह हनफी सो गां फतावा अल हिंदिया उसी अपल सा कि प्लीज़ियर उलमा अल्हम्दुलिल्लाह ची आसिज़े ची इक्रिया सा एन एनसाइक्लोपीडिया दे फ़िक़्ह हनफी नु कपावजिया फतावा आलमगीरी दे पी सा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नु पुआपान और मेम तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फ़ोदाते दे दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया सो ज़ुल लीव की अपल लॉज ऑफ सलाह नमाज के अहकाम दे पिलादा इंशाअल्लाह नुपुआ पान सा से ऑन अंग्ले वेशों सा से वेशों ऑन उर्दू और फतावा आलमगीरी की भी मैं आपको ज़ियारत करा दूं सा से फतावा आलमगीरी ये नप्लीजिया वॉल्यूम में तहारत दा कौमिया वॉल्यूम वो अला से सा से नुल सिलेबस इंशाअल्लाह नुपुसई ऑपान दे पिदा साबान लीव ला सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूल अल्लाह। तो देपी फतावा आलमगीरी की मुपे मौशून साबान की शोजला अल्हम्दुलिल्लाह लॉज ऑफ सलाह से कि अमीर अहले सुन्नत फे निखरिया नु कपाव जिया किसी तरह जोली समरी दे साबान गां लीव फतावा आलमगीरी फतावा रज़विया अल्हम्दुलिल्लाह बहार शरीयत सबन गां लीव की नो मालमा एंड गैर आलिम ली जिफिसिल की लिया सा उबिया लिया उसी ली पापू को पा सबन तेम से की फिन सेवी लादा अलो अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह फिन फैन गां था भाई लिन फेया सबन लीव लव इन द फसिल उर्दू लिन दन्नु ए après अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तराजिम दे दावत इस्लामी département traduction de Dawat Islami fait une traduction saban livre là dans plusieurs langues et alhamdulillah fait en anglais aussi et bientôt bonne nouvelle inchallah pour vous autres ban mauriciens qui nous pour gagner sa laws of salah en créole aussi alhamdulillah donc fini traduction mais là les ban dernier stages inchallah zawajal bientôt inchallah zawajal pour gagner en créole aussi. Alors c'est da fatawa alamgiri saban quelque chose c'est qui sorti depuis dans un jimun sur l'écho qui casse son wuzu avec casse son ghusl. Ça c'est नजासत गलीज़ा parce que normalement depuis dans जिमुन से लेको l'homme aussi सोची mais est-ce que l'homme li casse nos wuzu ou pour répondre moi non alors quand li pape casse nos wuzu li pape casse nos ghusl c'est pas najasat c'est pas napak la crasse li सोची depuis dans जिमुन से लेको mais si un जिमुन पे खासे est-ce que son wuzu casse est-ce que son ghusl casse ou pour dire non alors quand nous peut dire ça qui dit pas pécasse wuzu alors il pas napak les rimes aussi pareil donc inchallah azawajal plus details pour venir plus devant inchallah dans l'autre session concernant najasat ghaliza même parce que najasat ghaliza aujourd'hui on apprend juste un petit concernant jimun soleko ban quelque chose qui sorti depuis la jimun soleko qui quelque chose sorti depuis la jimun soleko qui lui appelle najasat ghaliza ça qui on note aujourd'hui ça qui nous apprend aujourd'hui inchallah dans l'autre session aster nous pour apprendre ban les autres quelque chose concernant ban animaux aussi qui ban quelque chose sorti depuis des animaux soleko qui animaux sont gisants, qui animaux sont la selle, sont pipi, ça ban quelque chose là pak et ban quelque chose là napak, ये इंशाल्लाह पाक मुझे को दिया नजासत खफीफा ou bien नजासत गलीज़ा ली grand नजासत ou bien ली चिपची नजासत इंशाअल्लाह d'abord les autres sessions c'est qui peut venir nous pour en prendre concernant ça c'est bien important moi espérer qu'inch'Allah l'autre semaine aussi vous pour venir avec votre diary plim et vous pour en prendre ça faisane taharat course voilà là इंशाअल्लाह ou en 15 minutes qui ban question c'est qui est là tête ou pose ça ban question là तो इंशाल्लाह c'est qui vous capable répondre vous pour répondre et vous pour faire requête avec vous tout c'est qui vous pose question qui si tu pour capable rester le topic les tu beaucoup plus bon si nous pose question mais seulement mais il n'est pas nécessaire ou dire que ben moi une question qui peut fatiguer moi la tête moi besoin poser out of topic ठीक है pas problème mais seulement ज़्यादातर अगर हो सके तो टॉपिक पर ही सवालात पूछेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा अच्छा रहेगा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूल अल्लाह। हाँ बिल्कुल ये इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
अच्छा, अली अब्दुल्ला सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, एस की सेमेन का गुस्ल, सेमेन कहते सा अली अब्दुल्ला भाई, सेमेन, SEMENE, सेमेन, 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 वल्लाह आलम, मुपन को अली अब्दुल्ला भाई, सेमेन कहते सा, सेमेन। सईद तापसी भाई कहते हैं, कैन आई बाय द बुक लॉज ऑफ सलाह? यस श्योर सईद भाई। उपगैली लो मकतबतुल मदीना पोलवी वैतेन मौलाना इब्राहिम खुश्तर स्ट्रीट आइडोगे, एक्स आइडोगे स्ट्रीट पोलवी लादा उपू कपाव गैली सा लीव लॉज ऑफ सलाह। आचिया कहते हैं, वालेकुम सलाम, का एन मदाम ली गए सी सोहैज एस्की दे पिस्सा qui nous besoin compte Jésus et après ça Jésus là nous fait nous roussel. जी, normalement tout madame, normalement zut compte zut date कि voilà telle date que li pour gagner ce période. Alors li besoin attendre, mais une fois li आगे पीछे, une fois li à l'antigit avant, une fois l'antigit après. Alors jour qu'il infini commence gagner ce haise, li besoin rappel depuis ce jour là qu'il trouve ce haise, li besoin compter 10 jours. Si après 10 jours aussi il peut continuer gagner 10 ans, ou bien haise il a plusieurs couleurs. Haise ce détail quand vous pouvez lire dans le livre, haise pas juste rouge, pas juste 10 ans, il a plusieurs couleurs, marron, jaune, ça là. Alors tant qu'il peut continuer gagner sa bonne couleur là, sa bonne haise là, alors il compte haise même, et s'il dépasse 10 jours là, il peut bien faire roussel, il peut continuer à faire son namaz. Fazila पूछती हैं, Lea ou faire namaz en musik pik ou tuili, est-ce qu'il ou wuzu cassé? Non, wuzu pas pour casser. Au contraire, plus devant Inch'Allah ou pour en prendre, qui sa musik c'est qui un tuye, sa jisant là aussi li pas napak, li pas najasate ghaliza. तो आप इंशाल्लाह प्ली devant ou pour en prendre, mais ou réponse que non ou wuzu pas pour casser. अच्छा, वाशिफा कहती हैं, एस्की ना इस्तिहाजा शक्फा की मदामला अल्फा नमाज pour bien faire ghusl? Non, wuzu li pour bien faire définitivement, mais अच्छा, सेमेन से स्पर्म अस्ते मुगेत अली अब्दुल्ला भाई सो क्वेश्चन की चेते एस्की सेमेन का ghusl? जी définitivement, quand c'est sperme sorti depuis dans un miché sur l'écho avec shahwat, तो लेला लिपुकास ou ghusl. Shahwat veut dire avec désir. Si un démon lève quelque chose lourd avec sa pression là, sperme final sorti, ça li pas pour casse ghusl. अच्छा, बीबी सलमा सीरू कहती हैं, प्लीज कारी साहब टॉक ऑन कुर्बानी से qui nous pas en droit manger quand beaucoup confuse pendant कुर्बानी. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल au contraire हमारी मजलिस आईटी मजलिस कोर्सेज ने अल्हम्दुलिल्लाह ये डिज़ाइन किया है कोर्स, तो मजलिस आईटी पे देजा फ़िया मशवरा लोला इंशाअल्लाह कि का बांजू कुर्बानी पुवीनी शेतु को मजा बकर ईद बांजू कुर्बानी प्ली विद इंशाअल्लाह प्ली अप्रोचे mais là इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल nous arrête une session taharat nous pour allo Qurbani. Ça, Zula, Inch'Allah, me explique concernant Qurbani et question-réponse aussi concernant Qurbani ही होगा, Inch'Allah Azza wa Jal. वैसे तो हमारे 12 सेशन है तहारत कोर्स pour une 12 sessions, 12 semaines. C'est qui nous prépare, c'est qui nous design sa course là, 12 semaines, 3 mois c'est-à-dire. Oui, 3 mois. 12 sessions, c'est 3 mois. अच्छा, शाहबाज दलमियाज वालेकुम अस्सलाम, कारी साहब si un jimun fait un namaz fajr, for example 6h30, il gagne même thawab avec un jimun fait un namaz 5h. 5h son namaz pas pour compter même azojizou, d'après Léa azojizou Shahbaz, parce qu'il Léa fajr peut commencer 5h24 si je ne me pas trompé. Attends, je check li dans application prayer times
Zoli application, Dawat Islami download li zot aussi. Oui, 5h24. Léa Fajr पे commencer 5h24. तो 5h24 jusqu'à, ये मैं देखना भूल गया, jusqu'à 6h42. Ça c'est Léa Fajr. Alors là-dedans li pou besoin faire namaz. इसमें उलमा के दोनों राय हैं, कोते अहनाफ उसी गैर हनफी उसी कि बेहतर यह है मर्द के लिए कि आखिरी वक्त में पढ़े, औरत के लिए है कि अव्वल वक्त में पढ़े, लेकिन वो सब मुस्तहब्बात में है। किसानला पुगै प्ली बुकू सवाब, ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, लेकिन नमाज बिज़ा लिया दौं लिया। अच्छा, c'est qui sorti transparent. Non, transparent là, c'est pas sperme. Transparent, c'est normalement en ourdou nous dit ali wadi, comment on peut dire ça wadi li enchigit lagli n'y en a la corde là-dedans, mais li transparent, li comme de l'eau. Li pas l'épaisseur pas comme de l'eau, li un peu épais, mais seulement sur couleur comme de l'eau. तो ये जो है वुजू तोड़ देती है, साली कास वुजू में गुसल नो, गुसल जिस स्पर्म की कासे। अच्छा भाई मुराद ने माशाल्लाह ये लिखा है कि लीव अवेलेबल लो मकतबतुल मदीना जुद कपाब अल आश्ते लो मकतबतुल मदीना साबान जुली जुली लीव ला। अच्छा, बीबी मंगू कहती हैं सलाम, एस्की एन जिमुन लिप्पा कों वे अच्छी ली ओवी फैन निकाह एस्की कपाव सा नो ली ओब्लिजे कों वे अच्छी आवों की ली फैन निकाह। तौफीक लोटू प्री इंशाल्लाह उपू गैली dans Maktabatul Madina quand vous aller parce qu'il plusieurs livres, plusieurs prix. Ou bien vous capable contacter nous admin Dawat Islami sur page, si vous êtes capable répondre nous इंशाल्लाह vous pour répondre ou ban prix c'est qui vous peut demander. अच्छा, अहमद W इन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, CN जिमुन इन बेये जेजी Troisième tantôt, est-ce qu'il est capable de faire Jumma? जी बिल्कुल capable de faire Jumma, s'il est encore propre, j'ai dit troisième, il est bien, mais jusqu'à l'air Jumma, il peut encore arriver à quelque chose qui soit roussel cassé, donc définitivement, il est capable de faire ça Jumma. अच्छा, शाहबाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम, कारी साहब सीएन जिमुन फेया नमाज फजर 6h30 सवाब, ये मैंने आपको जवाब दे दिया। सामुन फिनी रिपोन सलीम एस एफ, मैनी मैनी थैंक्स फॉर यू हेल्प टू अस इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह सलीम भाई, बस फॉलो करते रहें। सामिया अमीरा एस की इस्तिहाजा कपाब विन आवा हैज नो लिपुविन après même parce que quand हैज फिनी आले normalement comment dire si les prolonge हैज là ça s'appelle istihaza. अच्छा, रियाज मार्क्स कहते हैं une fois nous gagnons maloquea et gain un de l'eau dans la bouche. Est-ce que ça aussi casse wuzu? Non, normalement un safra nous appelons en termes charia safra, c'est de l'eau. C'est de l'eau montée, de l'eau jaune. Alors ça, li pas pour casse wuzu, li pas pour casse ou rosa aussi. Mais vomi qui casse rosa, vomi qui casse wuzu. Qui laquelle vomi? Plein bouche normalement हम मुंह भर जो बोलते हैं, तो plein bouche beaucoup de monde pense कि la bouche remplie. Non, plein bouche c'est pas la bouche remplie. Plein bouche qui veut dire कि c'est qui ou pan kapav chini. उनसे ही चीनी उपान कपाफ चीनी लिनविनी इनको तीन फिनी आले फिनी सोची. Alors ça normalement appelle ça plein bouche vomi et ça li casse wuzu. अच्छा, एन हमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, एस की जन्नत pour un madame trouve en bas son miché sur les pieds. ये जामे मुपान तंसा हदीस ला ou bien रिवायत ला कि मिché sur les pieds. Oui, pour maman, एना हदीस पाक अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात,
कि जन्नत ओबा मामो सुलिपिए में पू मिशिए सिल्मो एना बान रिवायत कुमसा कि मिशिए से लापोट दे जन्नत पू मादाम इसीलिए सही ओकिपली बियाली फेली कोता राजी करेगी तो कुमजली लापोट दे जन्नत पुली कि लिमेम पू विनन लापोट दे जन्नत पूसा मादामला Farhad Corimbakas kata assalamualaikum salam pour madame quand fini faire niyat pour hajj ou umrah si brin cheveux casse wuzu ou ghusl compté si brin cheveux casse wuzu ou ghusl compté मैं आपका सवाल समझा नहीं फरहाद मुपान comprend question pour madame quand fini faire niyat pour hajj ou umrah si brin cheveux casse wuzu ou ghusl compté wallahu alam qui peut demander repose-moi question si Zéji li pas faire ghusl jumma li gagne droit faire namaz jumma oui gagne droit faire namaz jumma rappelle bien que ghusl jumma c'est sunnat ça si un jimun li pan faire ghusl pour jumma li pan gagne l'occasion pas veut dire qu'il son namaz pan compté li bizin faire son namaz quand même li pan gagne le temps faire ghusl mais li bizin faire son namaz Sabina, assalamu alaikum wa salam. Qari sahab, est-ce que ghusl jumma li compte si une fait Zéji avant Maghrib? Non, Léla li pas pour compter ghusl jumma. Ghusl jumma c'est ou besoin faire jour vendredi, दिन सुबह सादिक के बाद बाज़ उलमा ने यह भी लिखा है कि Zéji aswa aussi si un jimun fin फेली li pas pour compte ghusl jumma parce que jour jumma peut commencer après subh sadiq. Jour jumma peut commencer après subh sadiq. Alors, les besoins faire après subh sadiq, n'importe qui peut faire ghusl. So, ghusl juma, so, ça va pour compter. Mais seulement, un parti ulama fin ça aussi, que non, si Zéji aswa aussi l'in fait ali, mais il peut gagner so ghusl juma, so, ça va, parce que juma, c'est fini commencer, après maghrib. लेकिन बेहतर यह है कि सुबह सादिक के बाद ही किया जाए. Si en cas, il y a une raison, là, il y a un problème. Mais sans aucune raison, voilà, pas besoin de quitter. अच्छा अहमद दुमन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह वालेकुम सलाम अहमद भाई कारी साहब की दुआ किनु कपाव ली या पुकिनु काल्म एंजिमुन सोकोलेया काल्म एंजिमुन सोकोलेया उस वक्त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ना चाहिए parce que कोलेया définitivement देखो ते शैतान सा अलो काउलिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शैतान सोवे तो ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ें वहां पर मिसलमा पाल याली फोफो लिपुगे प्लीज कोयाली बेजा की तो पिल लिए दे मम्मा चुपके से पढ़ें दुस्मा आवाज में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो ये इंशाल्लाह उसका काल में हो जाएगा. अच्छा कतीजा एसएफ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम li bien bon ou peut expliquer le taharat li bien important. जी définitivement li bien même important. Taharat c'est quelque chose de très important. अच्छा हुस्ना साजिदा कहती हैं si une madame in opéré ghusl in obligatoire li pas pour capable lave ses cheveux comment li pour faire ghusl normalement si une madame ou bien un monsieur si li pas capable lave ses cheveux ou bien n'importe qui partie le co à cause qui est une raison valable alors là il fait un massah il passe la main mouillée s'il n'est pas capable s'il est mazour vraiment alors il passe la main mouillée massah कर ले तो इंशाल्लाह उसका गुस्ल compte. Bibi Mangou est-ce que si Chifi l'hyperis avec un djimoun pape envie converti pour faire nikah qui besoin faire besoin cause ali besoin explique li कि भाई तो पे faire zina et zina c'est quelque chose haram Allah azza wa jalla so qahar pouvin lo toi azoji to peut rester avec un djimoun qui li pas to monsieur d'après islam dit étranger pour toi to peut rester to peut faire zina mais zina ina Allah so azab la दो besoin cause ali इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं प्लीज किसा कीनू का पाफ फेयर और दुआ भी करें उसके लिए फेयर दुआ उसी कि अल्लाह तबारक व तआला दुनली हिदायत बस daí question mo pe pon parce que nous lea fin arriver là inshallah nous pour faire dua et nous pour allo Madani channel Madani Mudakara
अच्छा, दही किस्चों से फातिमा सोएजोदा सियाल बेइए पहैज बिज़े फ़ेया लैतौशों। जी बिल्कुल, बिज़े फ़ेया लैतौशों। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह, जो कुछ सुना उसे याद रखने, अमल करने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। हमें दीन सीखने की तौफीक अता फरमा, उस पर अमल करके दूसरों तक पहुंचाने की सआदत अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो कुछ सुना उसे याद रखने, अमल करके दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 बिजाहिन नबीजिल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाब लिए इंशाअल्लाह लुत्फ से मैन उसी इंशाअल्लाह ज़वजल même ले वित्या अकेडमी जिसका नेवे 15 फैज़ान तहारत कोर्स tous les samedis इंशाअल्लाह et jeudi इंशाअल्लाह tranquillité du cœur et tous les vendredis दावत इस्लामी सो इज्तिमा hebdomadaire pour le live le दावत इस्लामी सो page même आस्ते इंशाअल्लाह ज़वजल नु अल्लो मदनी चैनल सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।